Yes, dear student, now this is addition of a vector, right? We have already discussed the types of vector, is it right? Unit vector, orthogonal unit vector, how we write or represent the vector, displacement किसको बोलते हैं, ये तो हो गया. Now coming on the next topic, if there are two vectors, suppose दो force है, suppose there is a ball and one of your friend applied a force F1 in this direction and one of your another friend applied a force in this direction. See clear? दोनों vector है. Then definitely where the ball will go. Is it right? So this is a part of the addition. या फिर इसको अगर समझ में नहीं आ रहा है तो let me do something कि suppose in a box you both are applying in some of the direction. Is it right? या फिर different direction. तो इसमें addition होने के बाद right the total इसमें क्या आ रहा है? Is it right? और इन फिजिक्स सपोज इफ यू वांट टू अंडरस्टैंड कि एडिशंस क्या है इसमें सपोज है ना सपोज देयर आर टू फोर्सेस आर देयर F1 एंड F2 इज इट राइट दो फोर्स है हमारे पास F1 एंड F2 अप्लाइड इन वन पॉइंट रिजल्टेंट क्या होगा तो बिफोर गिविंग द रिजल्टेंट आंसर हमको इसको डायरेक्शन देखना पड़ेगा व्हाई बिकॉज वी नो दैट बोथ आर माय वेक्टर इफ देयर इज अ वेक्टर आई हैव टू सी द डायरेक्शन आल्सो अगर मान लो मेरे पास दो स्केलर क्वांटिटीज होता फॉर एग्जांपल वर्क डन इज अ स्केलर क्वांटिटी दो वर्क डन है तो नेट क्या होता है मैं डायरेक्ट इसको क्या करूंगा एडिशन करूंगा सो वंस अगेन प्लीज राइट एंड नोट दैट स्केलर क्वांटिटीज आर ऑलवेज एल्जेब्रिक समेशन एल्जेब्रिक समेशन हमेशा होगा मतलब ऐड हो जाएगा उसके लिए डायरेक्शन देखने की जरूरत नहीं है लेकिन यहाँ पे ऐड करने से पहले डायरेक्शन देखना जरूरी है क्यों just see here example when two vectors have no angle when there is no angle we simply follow this but if there is angle then we can write the other form called triangle parallelogram law of vector addition मतलब दो है ट्राइंगल लॉ ऑफ ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन और पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन if two vectors a and b are in same direction then the resultant of them is also in same direction मैंने dotted में resultant लिखा है look at here dotteds are represented with the resultant तो resultant can be written with the a and b a plus b if vector a and b a is moving right side and b is moving toward the left side then the resultant may be toward the right side or may be toward the left side it depends upon the magnitude if a is greater than the b then the direction of the resultant is towards the a if here b is greater than the a then the resultant will toward the direction of r is it right so either this or this can be happen कुछ भी हो सकता है clear it is so here definitely opposite so I have to use minus मैंने opposite में पहले भी बोला था opposite whenever direction is opposite we always represent with negative so here in place मैंने b के सामने एक नेगेटिव रखा तो प्लस माइनस क्या हो गया माइनस दैट्स व्हाई आई हैव रिटन हियर इट इज a minus b clear even here also b minus a so first which magnitude is greater I have to write first this one clear and here also you can see they two are not in a line like जैसे ये दोनों ये तीनों क्या कर रहा था एक लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा था बट ये कुछ अलग डायरेक्शन में है तो देखो ये हो जाता है इसका रिजल्टेंट हमेशा ऑलवेज these three represent resultant and two vectors represent what the side of a triangle याद रखना हमेशा अब तुम बोलोगे कैसे नाउ लुक एट हियर जैसे मैंने अभी भी बोला था देयर इज अ फुटबॉल एक डायरेक्शन ये हो गया एक ये हो गया है ना सो अगर मैं इसको थोड़ा represent करूं from this point and from this point if I represent this vector in this direction is it clear so look at here then definitely the resultant what is the resultant is it right resultant will be always the closing side ये closing side को represent करेगा is it right this is the side of this one तो देखते हैं इसको right कैसे ये तुम्हारा for this if there is no angle between the a and b this is the direction of a and this is b there is no angle होता तो यहाँ ऐसा होता but there is no angle then we always write the plus maybe a plus b or a minus b but now we'll do another one having some angle अब अगर angle होगा तो क्या follow करेंगे is it right so write down then dear student now first of all you write the statement is very simple right
स्टेटमेंट समझने वाली बात है। देखो एक ट्राइंगल है, दिस इज कॉल्ड ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ये भी एडिशन में ही पड़ता है, बट नाउ इट हैज सम एंगल। द वेक्टर ए एंड बी हैज सम एंगल, दिस इज द थीटा, इज इट राइट? एंड हाउ वी राइट दिस? और पहले स्टेटमेंट देख लो, ये दो साइड ऑफ ए ट्राइंगल है, तो वेक्टर, दोनों वेक्टर क्या कर रहे हैं, टू वेक्टर रिप्रेजेंट टू साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल, लेकिन कैसे? मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन के साथ। तो बोलेंगे क्या? टू वेक्टर्स रिप्रेजेंट बोथ इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ टू साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल, देन, लेकिन उससे पहले और एक चीज है, इन सेम ऑर्डर, जो मैंने पहले भी थोड़ा बहुत बताया था तुमको। तो ये सेम ऑर्डर क्या है? देखो, वेक्टर ए का एरो और वेक्टर बी का टेल एक जगह होना चाहिए, दिस इज कॉल्ड सेम ऑर्डर, इसको कहते हैं। देखो एरो एरो मतलब सेम ऑर्डर में जा रहा है, लेकिन रिजल्टेंट विल बी ऑलवेज इन द ऑपोजिट ऑर्डर, इज इट राइट? देन रिजल्टेंट रिप्रेजेंट, वो भी मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन के साथ ही रिप्रेजेंट करेगा बाय द थर्ड साइड ऑफ द ट्रायंगल, by the what? Third side of the triangle. So this is the statement of the triangle law of the what? Vector addition. Okay, after getting this, can we write here resultant R is equal to A plus B? No, I will write the some other formula, is it right? So let me first find the magnitude of the R, is it right? To find this magnitude, now let me split, फिर से वही आ रहा है, before this video you have already observed or watched the previous video in which we have already discussed to whom we say splitting. Splitting means components बनाना, तो वेक्टर b का मैं components बना रहा हूं. Why we need to form the components? So carefully, right, note it that if the vectors is not in the horizontal, I mean to say not represent the x-axis, neither y-axis, if it is somewhere else, then those vectors are always split into the two different components. So one of the components is toward this direction, as we know, मैंने बताया भी था तुमको, this is what, then you say it is b cos theta without doing any trigonometric ratio, right? Yes. And definitely here right angle to that b cos, there will be b sin. यहां पे जो बनेगा वो इसके साथ पैरेलल है, तो जो भी वेक्टर जिसके साथ पैरेलल होता है उसको वही मैग्नीट्यूड लिखा जाता है, इज इट राइट? सो आई विल नॉट राइट हियर, आई विल राइट हियर, क्योंकि दिस एंड यहाँ पे जो मैं लिखने वाला हूं ये दोनों क्या है? पैरेलल है. सो आई विल नॉट राइट हियर, आई विल राइट हियर, इट इज b sin theta. Don't get puzzled. Clear? Now this is a what? Definitely this is a right angle triangle. In the right angle triangle, by Pythagoras, है ना? Pythagoras. By Pythagoras we can write very simple. क्या लिख सकते हैं by the Pythagoras? Is it clear? So by Pythagoras we can write this. Look at here. This is base square. This is perpendicular square is equal to what? Hypotenuse square. Now open this. A square plus b square plus 2ab cos theta. And now open this, b square sin square. After that, look at here, this and this I have taken a common, b square common ho gaya, cos square plus sin square. Why I have done this? Because you know the answer is 1. So overall you are getting here a square plus b square plus 2ab cos theta. So this is a way to find the resultant, या फिर इसको स्क्वायर रूट लगा लो क्योंकि स्क्वायर हटा दिया मैंने इसमें. So this is a way of finding what? The magnitude of this. Is it clear? And now let me show the direction. To know the direction, right, always we need some angle. याद रखना, डायरेक्शन पता करने के लिए एंगल की जरूरत होती है. फॉर एग्जाम्पल मैं बताऊं कि रिजल्टेंट ने 50 डिग्री ए के साथ बनाया, तो हो गया डायरेक्शन. Is it clear? So to know about this angle alpha, so let me write tan alpha. Tan alpha क्या होता है? Perpendicular by base. Base is a plus b cos theta. In this way I can find, अगर अल्फा निकल जाएगा तो तुम्हारा क्या हो जाएगा? Definitely you can find the direction. So for direction we use this, and for magnitude we use this. Is it clear? याद रखना, कोई भी एंगल थीटा दिया जाएगा उसको हम लोग इस तरह से सॉल्व करेंगे. Clear it is? Dear student, once again please write the parallelogram law of vector addition, right? This is the another method to
राइट, फाइंड आउट दिस, बट मैं तुमको बताऊंगा दिस पैरेललोग्राम लॉ मेथड एंड ट्राइंगल्स बोथ आर व्हाट इक्वल, इज इट राइट? यस। तो व्हाट इज द फर्स्ट ऑफ ऑल द स्टेटमेंट? टू वेक्टर्स रिप्रेजेंट बोथ इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, वो तो हमेशा उसमें भी था। टू एडजेसेंट साइड ऑफ ए पैरेललोग्राम, पहले तो देख लेते पैरेललोग्राम कैसा है इसमें, है ना? टू एडजेसेंट बोल रहा है इसमें, तो फ्रॉम दिस पॉइंट, फ्रॉम ए कॉमन पॉइंट, एक पॉइंट ले लेते हैं, वहां से इस साइड को और इस साइड को मैं क्या बोलता हूं? एडजेसेंट। और यहाँ पे और एक साइड आ गया और यहाँ पे भी एक साइड आ गया। आई थिंक इट्स क्लियर। दिस इज पैरेलल, सो अगर मैं यहाँ पे ए वेक्टर लिखूं तो दिस इज ऑल्सो वेक्टर ए। इफ आई राइट हियर वेक्टर बी, then this is also vector b. Clear? Adjacent side, this is parallelogram. Okay, then the resultant represent both in magnitude and direction, वो तो हमेशा रहता है, but from the same common point and the diagonal, यानी कि यहां से अगर मैं इसका diagonal बनाऊं तो ये हो जाएगा इसका resultant. Is it right? After that my dear, मैं यहां से एक straight line खींचूंगा और इस वेक्टर b को स्प्लिट करूंगा, यहां लिखूंगा b cos थीटा एंड हियर इट विल बी व्हाट? इट इज b sin थीटा। तो वंस अगेन दिस इज अ पार्ट ऑफ द पाइथागोरस राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। तो अगेन व्हेन वी गोइंग टू फाइंड रिजल्टेंट ऑफ दिस a and b, then again I have to go with this. It means the formula of the triangle and parallelogram both are what? Same. For direction also same. If alpha is the angle between the resultant and what? A, any one of the vector A, or maybe it is B, then we write this way. Is it right? But here angle is the alpha is the angle between resultant and A. When it is with the B, तो B को यहाँ रख के देखना, यहाँ पे A आ जाएगा, यहाँ B, यहाँ पे A. So this is the statement and the difference between triangle and parallelogram law. Yes, dear friend, now this is polygon law of vector addition. So in this we will take number of what vectors, है ना? And now पहले मैं दिखा देता हूँ इसको, right? Suppose there is a vector A, is it clear? And this is a vector what? B, clear? Definitely you will say this is the resultant of both. Is it right? Resultant को मैं थोड़ा सा dotted में निकालूँगा, clear? In the dotteds, let me show you this. This is the resultant, and the resultant is A plus B. I think there is no doubt. Clear? This is what? A and this is B. Suppose there is another vector called C. Is it right? Then resultant between this A, B, C. How we find this? A and B, तो already it is formed. So now let me take A and B and C. This is also same order, है ना? Same order में तो हम लोग एडिशन लिखते हैं. A and B are same order. I have written A plus B. Here A plus B is in this direction and C is in this direction. So the resultant of this is this. And let me write the resultant is A plus B plus C. Yes or no? Now suppose there is another vector, suppose D. Is it clear? Then definitely the resultant of this is here. Look at here. A plus B plus C and D. If I take, na? So this is the resultant one. And here I will represent A plus B plus C plus D. Is it right? And suppose there is one more vector. Suppose E. Then definitely. And if I say suppose अगर ये मेरा last है, तो this is now closing side. देखो. इस पॉलीगॉन का क्लोजिंग साइड है ये, एंड दिस इज द रिजल्टेंट ऑफ दिस, वेयर दिस रिजल्टेंट इफ इट इज r, then this r is nothing, it is a plus b plus c plus d and e, सेम ऑर्डर में है, तो आई विल राइट a plus b plus c plus d plus e. So this way we write the resultant, where resultant is the closing side, वही मैंने स्टेटमेंट में लिखा है. Number of vectors represent both in magnitude and direction by the sides of a polygon. Is it right? Sides of a polygon. Resultant represent both in magnitude and direction by the closing side of a polygon in the opposite order. So this is the polygon. Is it right? I think it's very simple. You note it and write down in the copy.